हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल न्यूट्रल कट क्रीज आई मेकअप दिखाने वाली हूँ विद अ विंग लाइनर। मैंने काफ़ी टाइम बाद विंग लाइनर किया है एंड या लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो गाइस एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। सबसे पहले मैं NYX का आई शेडो बेस लगा रही हूँ अच्छे से। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस इट इनटू द आई एरिया एंड देन मैंने इसको सेट नहीं किया है किसी भी पाउडर से। फिर मैं जूवियास पैलेट का एक लाइट टू मीडियम ब्राउन शेड वाइशी ब्रश पे मैंने लिया है और आई एम जस्ट फर्स्ट गोइंग टू गिव द शेप जो मुझे शेप चाहिए और उसके बाद मैं बैक एंड फोर्थ करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। दिस ब्रश इज़ परफेक्ट फॉर दैट। वाइशी की ये फ्लैट ब्रश भी है और इट इज़ अ लिटिल मोर इट्स नॉट वेरी डेंस, तो आप इसे थोड़ा सा बफ आउट भी कर सकते हो। Next, I'm taking a transition shade. This is not really required, but just to buff out the first brown shade, I have just done that. और उसके बाद मैं ये LA Girl Pro Conceal कंसीलर से कट क्रीज कर रही हूँ एंड इस वाले कंसीलर से क्रीज को कट करना इज लिटिल इजियर बिकॉज ऑफ द ब्रश। और ये लाइट ग्रे टोप टाइप का एक शेड है जो मैं इनर और आउटर कॉर्नर पर यूज कर रही हूँ और एकदम सेंटर ऑफ द लिड पे मैं ये वाइट ऑफ वाइट टाइप का जो शेड है वो यूज कर रही हूँ। तो ये एक हेलो टाइप का स्मोकी आई है बट द शेड्स जो हमने साइड में यूज किए हैं इनर और आउटर कॉर्नर पे दैट इज वेरी वेरी लाइट। अगेन आई एम गोइंग बैक विद द फर्स्ट शेड जो मैंने यूज किया था और हल्का सा उसे आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे टैप कर रही हूँ ताकि एकदम बहुत हल्का सा एक हीलो इफेक्ट जैसा आपको दिखे। इट्स लाइक अ न्यूट्रल आई, इट्स वेरी वेयरेबल और इसके ऊपर आप कोई भी लिप कलर यूज कर सकते हैं सिंस इट इज सच न्यूट्रल लुक। तो रेड, न्यूड, मरून, पिंक, एनीथिंग यू कैन यूज। और मैंने इंग्लॉट का आईलाइन जेल आईलाइनर यूज किया है फॉर द आईलाइनर, विंग्ड आईलाइनर। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेस। सबसे पहले मैं प्राइम कर रही हूँ मेरे फेस को एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज दिस Maybelline Superstay foundation. So I wanted to like go for like a very very matte look even on the face. मेरी eyes भी totally matte है. So I'm just going to buff out this foundation all over the face. And एक बार जब मैंने उसे brush से कर लिया, I'm just going to press with it with like a beauty blender. So excess, this is the Vichy sponge. So जो भी excess foundation है that comes off and the blend is seamless. Now I'm just going to apply KIKO Milano का full coverage concealer under my eyes. और ये थोड़ा सा dark concealer है तो it color correct as well. And just to brighten up my under eye area मैं Wet n Wild का concealer use कर रही हूँ as a like liquid highlighter. अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है तो आप डायरेक्टली भी एक लाइटर कंसीलर यूज़ कर सकते हैं टू काइंड ऑफ डू द हाइलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग। सो आई एम जस्ट यूजिंग दैट और एकदम नोज के भी पास में मैं ला रही हूँ सो दैट मैं नोज के आगे भी लाइक ये रिवर्स कॉन्टोर बोलते हैं इसे, आई एम डूइंग दैट। एंड बेसिकली पूरे सेंटर ऑफ द फेस पे कंसीलर मैंने लगाया टू गिव माई फेस अ नाइस कॉन्ट्रास्ट। एंड फिर मैंने ये वाइशी का ब्यूटी स्पंज लिया है एंड इट इज़ ऑन सेल राइट नाउ फॉर टुडे आल्सो ऑन Amazon, you can check it out। और उसके बाद मैं मेरा फेवरेट क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ Topaz Tan from NYX। It is like a cream contour and the good thing about it is it's not like super duper pigmented, so when you buff it, जब आप इसे buff करते हैं blend करते हैं तो it does not look muddy। and especially if you are a beginner or if you like subtle contour, this is a very good product। मैं स्पंज से ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ। इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेंड so you don't have to worry about blending this contour। So if you are learning contouring, I would highly recommend this particular product। I'm just going to buff the contour into place and then we will move on to powder। Even for the nose contour I'm using this, and now I'm using this is
Fit Me का Maybelline का Fit Me लूज पाउडर है. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. दिस डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ पिगमेंट. अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड पाउडर चाहिए, आई वुड सजेस्ट मैक स्टूडियो फिक्स या फिर NYX का हाइड्रा मैट, हाइड्रा टच, ऐसा करके कुछ है. दैट पाउडर इज वेरी गुड. I'm not doing a lot of baking, so I just buffed it out. And now moving on to the bronzer. For bronzer, I have used MAC Give Me Sun. It's like a very warm bronzer. Looks very nice on our Indian skin tone. मैं वो लगा रही हूँ. And then we will move on to blush. For blush, Maybelline का ये Master नहीं, Face Studio का blush है. So I'm going to use that. The NYX की blush brush है. I'm just going to apply that pretty lightly. I just want some color. And for highlighter, Balm Matte Luminizer, I've taken it out after a long time. And मुझे I find ये छोटी brush like a big blending brush, but not like a face brush. उससे जब मैं लगाती हूँ तो it is more precise. Highlighter is more precise. Using the same colors on the lower lash line also. सबसे पहले वो transition shade use किया था, उसके बाद वो light medium brown shade मैंने use किया. And I'm leaving the lower lash line just like that. And for the lips also, I'm going to use like a brown lip liner. This one is from Miss Claire. As I said, इस type के eye look पर आप कोई भी lipstick लगा सकते हैं. I went in with a new kind of a lip combination. This is Cool Intentions from NYX Powder Puff Lippie range. Last thing remaining is to curl your lashes, apply mascara, and if you want, you can go ahead and apply some false eyelashes also. I'm just going to apply this Palladio Mascara. And just to kind of, since I'm not doing any eyeliner on the lower lash line, मैं थोड़ा सा deepen up कर रही हूँ lower lash line को. Just applying a little bit of a dark matte brown eyeshadow and just applying some false eyelashes to just give this an extra flare. And lower lash line पर भी मैंने mascara लगाया है. And this is the final look, guys. This is like very subtle, very wearable look. And again, as I said, you can use any lipstick on this kind of a look. I hope you all enjoyed this video, guys. Thank you so much for tuning in, and I will see you in the next video. Bye.